Assalamualaikum friends, my name is Muhammad Abbas. You are watching Learning English Grammar with Muhammad Abbas. Guys, if you like my videos, please subscribe to the channel and press the bell icon so that you will get my more new videos as soon as possible. In today's video, I am going to explain a structure which is really plus adjective. इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ really प्लस एडजेक्टिव। अब really प्लस एडजेक्टिव क्या है, हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं और क्यों इस्तेमाल करते हैं। In this video I am going to explain really plus adjective. So let's come to the topic. So here we are with the topic really plus adjective. Now what is really plus adjective and what does it mean, how to use it, where to use it, इसका क्या मतलब है। तो देखिए, really is an adverb. According to grammar, it is an adverb. Grammar के लिहाज से ये एक adverb है. Is this clear? Really means very. It means very. Very. Really का मतलब है very और very का क्या मतलब है? Very का मतलब है ज़्यादा. ठीक है. देखिए इसका क्या इस्तेमालात है? इसका क्या इस्तेमालात है? How to use it? Where to use it? See, really is used to make emphasize on an adjective. It is used to make emphasize, right? Make emphasize on an adjective. What does it mean? It means that it is used to make adjective stronger and stronger. Is this clear? ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? हम इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि हम adjective को मजबूत बनाएं. ये adjective को मजबूत बनाती है. Really जो है ये adjective को मजबूत बनाता है. See the example. She is a really intelligent student. She is a really intelligent student. We can also say that she is an intelligent student without this adverb. Why did we use adverb here? Because we wanted to make an adjective stronger. Here, we emphasized on an adjective. We made it stronger. She is a really intelligent student. So it means she is very intelligent student. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है she is a really intelligent student. वो बहुत ज़हीन लड़की है. वो बहुत ज़हीन लड़की है. हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वो लड़की ज़हीन है, वो लड़की ज़हीन है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको मजबूत बनाए, एडजेक्टिव को मजबूत बनाए. ये हमारे पास एडजेक्टिव है, तो हम फिर कह सकते हैं she is a really intelligent student. वो एक ज़हीन लड़की है, वो एक बहुत ज़हीन लड़की है. ठीक है, हमने एडजेक्टिव को स्ट्रॉन्ग बनाया with the help of really. really की मदद से हमने एडजेक्टिव को मजबूत बनाया. ठीक है, सेकंड एग्जांपल को देखिए. It is a really good book. It is a really good book. Now what does it mean? It means that we emphasized on an adjective. This is an adjective, right? Good is an adjective. We can also say that it is a good book. It is a good book. But if we want to make an adjective stronger, then we have to use adverb really. This is an adverb, right? It is a really good book. We emphasized, or we want to make an adjective stronger. So we can say that it is a really good book. Or we can also say that it is a very good book. A very good book. If we say in Urdu, it is a really good book. ये किताब बहुत अच्छा किताब है. ये किताब बहुत अच्छा किताब है. हम कह सकते हैं. हम जो है हम एडजेक्टिव को मजबूत बनाते हैं, तो हम इसलिए हम यहाँ पर really इस्तेमाल करते हैं. अगर हम सिंपली कहें ये बुक अच्छा है, ये बुक अच्छा है, सिंपली. बट अगर हम चाहते हैं कि इसको स्ट्रॉन्ग बनाए, एडजेक्टिव को स्ट्रॉन्ग बनाए, तो फिर हम कह सकते हैं ये बुक बहुत अच्छा है, ये बुक बहुत अच्छा है. सो देन फिर आपको चाहिए कि आप really को इस्तेमाल करें एडजेक्टिव से पहले. इट इज अ रियली गुड बुक. ठीक है, लास्ट एग्जांपल को देखिए. यू आर अ रियली हैंडसम बॉय. यू आर अ रियली हैंडसम बॉय. नाउ व्हाट डज इट मीन? वी कैन आल्सो से दैट यू आर हैंडसम बॉय. यू आर हैंडसम बॉय. बट वी वांट टू make adjective stronger. We want to make an adjective stronger. So then we use an adverb very. With the help of really, we made an adjective stronger. So now it means that you are a really good or handsome boy. You are a really handsome boy. So it means you are a very handsome boy. Is this clear? Adjective को हमने adjective को मजबूत बनाया. हमने यहाँ पर adjective को मजबूत बनाया. अब आप लोग सोच रहे हैं कि एडजेक्टिव क्या है. मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाई है. उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. अगर आपने देखा नहीं है तो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन से. यू आर अ रियली हैंडसम बॉय. आप बहुत खूबसूरत हैं. आप बहुत खूबसूरत लड़का है. ठीक है. इज दिस क्लियर गाइस? सो इट वाज द एंडिंग ऑफ वीडियो.
Now, if you have any kind of question regarding this topic, you can ask me in comment box. I will be there to answer your question. Guys, if you haven't subscribed my channel yet, please do it right now and press the bell icon so that you will get my more new videos as soon as possible. Thank you.